Assalamu alaikum, dear students. In fifth online lecture, we started the topic Cripps Mission Proposal. In previous lecture, I have told you the background of Cripps Mission Proposal. Let's see. This was done in the previous lecture, means lecture number 4. Second World War was started in 1939. British needed the support at that time, and Hindus took advantage and started movement against the British. And in the first step of the protest, Congress ministers resigned from the ministries, those ministries which they got in 1937. This was the happiest day for the Muslims, and they celebrated the day of deliverance on 22nd December 1939. At that time, Japan also jumped in this war against the allied nations, means Britishers, and they also bombed on the coastal areas of India. In that grave situation, means in a very critical situation, British government sent a mission for the reconciliation, political reconciliation, यानी दोबारा से तज्जिया करने के लिए, दोबारा से सोच समझ फहम फरासत के साथ solution of the political crisis. On 22nd March, these three ministers came to India under the leadership of Sir Stafford Cripps. They met with the different leaders of political parties and they gave some proposals known as Cripps Mission proposals. Look at this. India's independence means after the war, India will be given the independence, but they didn't set any time of the independence. Constituent Assembly will be formed after the war, and its member will be elected from the provincial assemblies and lower houses of the provincial assemblies. Constitution made by this assembly will be acceptable to the British Crown. यानी जो constitution ये assembly बनाएगी इंडिया के लिए वो British Crown के लिए acceptable होगा. Also agreement will be made for the settlement of all the issues of the Hindus, यानी मुआहदे होंगे. Provinces right was given to opt out of the union, यानी provinces को ये हक दे दिया गया कि वो किसी सूबों की यूनियन से अगर अलग होना चाहते हैं तो they can separate and they can कह लें कि अलग होंगे after 10 years. But defense during the war or defense will be in the hand of the British government. These were the proposals, and these proposals were rejected by Muslim League and National Congress. Muslim League it did not concede her demand for Pakistan in clear terms, यानी क्रिप्स मिशन प्रपोजल में पाकिस्तान की डिमांड को खुले तरीके से वाज़िया तरीके से कबूल ही नहीं किया गया था. And they also had the observation that they were not taken into confidence in discussion. इसका भी मैं बता देती हूँ, they were not taken यानी any policy made for the subcontinent, इसमें ओपिनियन जो है तो मुस्लिम्स की नहीं ली जाती थी, मुस्लिम्स को एतमाद में नहीं लिया जाता था कोई भी स्टेप उठाने के लिए, चाहे कि उसमें कोई भी पॉलिसी कोई भी प्लानिंग अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जाती थी तो उनसे कुछ भी पूछ गूछ नहीं करते थे, बल्कि उनके अगेंस्ट ही बनती थी. कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया? नो इमीडिएट स्टेप फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस, फौरी इकदाम इंडिया की आज़ादी के लिए इन प्रपोजल्स में नहीं था. अपोज द नॉन एक्सीडिंग क्लास अंडर विच द प्रोविंसेस हैड एन ऑप्शन टू स्टे आउट ऑफ द प्रपोज्ड यूनियन, यानी जो तमाम सूबों की एक यूनियन बनी हुई थी, सब कॉन्टिनेंट के 11 सूबे उनकी एक यूनियन थी, उनमें से इनको ये इख्तिलाफ़ था ब्रिटिश कांग्रेस को कि ये मुसलमानों के फेवर में ये पॉइंट जाता है, ये क्लास ये शर्त जाती है कि मुसलमान इस तरह उनको राइट मिल जाएगा कि अगर वो 2-3 सूबे अलग अपनी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं. दैट्स वाई दिस मिशन रिटर्न्ड अनसक्सेसफुल. आफ्टर दैट CR फार्मूला इन 1944. दिस फार्मूला ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. अब इस फार्मूले के पीछे बैकग्राउंड क्या है मैं बताती हूँ. कांग्रेस मेड ग्रेट एफर्ट्स फॉर द विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इंडिया, and they were trying to transfer of power to the Congress, but at that time Congress totally ignored the Muslim League, and British had no the Congress trickery, यानी ब्रिटिशर्स को इनके तमाम मंसूबों का पता था. क्लियर?
फिर मुस्लिम लीग ऑन द अदर हैंड, ये दोनों की स्ट्रगल है, बैकग्राउंड क्या है CR फार्मूला के पीछे। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर कायद-ए-आज़म. Qaid made it clear to the British and also Hindus, sentiments and feelings of 8 crore Muslims of India cannot be ignored. यानी एहसासात और जज्बात आप जो भी प्लानिंग करोगे उसमें मुसलमानों को किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते हो. In such situation, when Congress and Muslim League adopted different ways, at that time a Congress leader of Madras Assembly, Chakravarti Rajgopal Acharya, came and he tried to bring together both the parties. He realized Congress could not make any agreement without the cooperation of Muslim League. British will not accept any demand of the Congress, contrary to the willings of the Muslim League. यानी उसे ये पता था, उस हिंदू लीडर को, चक्रवर्ती राजगोपाल को, कि ब्रिटिशर्स कोई भी ऐसी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो मुसलमानों के अगेंस्ट जाएगी. Acharya at that time put a resolution to the Madras Assembly wherein the Congress was asked to accept the demand of Pakistan with appropriate change. यानी यहाँ पे आचार्य कहता है कि आप पाकिस्तान की डिमांड को तस्लीम कर लो एंड होल्ड डायलॉग विद मुस्लिम लीग रिगार्डिंग फेडरल गवर्नमेंट. इसने ये रेजोल्यूशन अपने कांग्रेस लीडर्स के आगे पुट अप करता है, बट उसके अब उस रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स क्या हैं. The Muslim League will confirm the demand of Indian liberation, will cooperate with Congress regarding the establishment of the temporary government in the interim period. आर्जी एक इंटरम पीरियड के लिए आर्जी हुकूमत, यानी मुस्लिम लीग इंडिया की आज़ादी के लिए साथ दे कांग्रेस का, और फिर टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनाने के लिए भी हेल्प करेगी. After the war, a commission will determine the Muslim majority districts in the northwest and the northeast. इस सेकेंड पॉइंट के 3 पार्ट्स मैंने कर दिए आपकी कन्वीनियंस के लिए कि अब एक कमीशन बनाया जाएगा जंग के बाद, सही है, और उसमें नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं वो डिसाइड किए जाएंगे. इन दीज एरियाज सेपरेशन फ्रॉम इंडिया विल बी डिसाइडेड थ्रू रेफरेंडम काइंड ऑफ इलेक्शन. इन एरियाज़ में रेफरेंडम के थ्रू, लोगों की ओपिनियन के थ्रू मालूम किया जाएगा कि ये किसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, सेपरेशन किसके साथ और सेपरेट होना चाहते हैं. इफ़ द मेजॉरिटी डिसाइड्स फॉर सेपरेशन, और अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के इलाके के लोग, प्रोविंसेस के लोग सेपरेशन डिसाइड कर लें, देन दिस विल बी इम्पोज्ड विदाउट एनी प्रेजुडिस, बिला तासुब, यानी फिर इस बात को माना जाएगा बग़ैर किसी तासुब के. In case of separation, mutual agreement will be made regarding defense, commerce, communication and other important matters. और in case अगर ये सूबे अलग हो जाते हैं तो फिर उसके रिलेटेड तमाम ये इदारे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे. What was the reaction of the Congress? Congress showed great concern over these proposals. In India, Congress committee rejected, All India Congress committee rejected it with majority. Gopal Acharya पे क्या होता है, personal attacks were made on Acharya. He resigned from the Congress and Madras Assembly with great protest over this attitude. And on the other hand, Qaid-e-Azam point of view was indicated certain flaws in formula, खामियाँ, pointed out the ambiguities, जो भी उसमें कमी बेशियाँ थी. If Acharya is ready to accept Pakistan, then why he is reluctant to accept Lahore resolution? यहाँ पे there was a point of view of Qaid-e-Azam कि अगर आचार्य एक्सेप्ट कर ले पाकिस्तान को तो फिर ये क्यों हिचकिचा रहे हैं लाहौर रेजोल्यूशन को, ओपनली डिमांड जो की गई हुई है उसको मान लें. In spite of all these flaws, CR formula is important in the history because for the first time the Indian partition was accepted. Gandhi Jina talks, 8 August 1942. Quit India movement, Congress, immediate withdrawal of the British. This movement, Quit India movement, was made, it is the background of the Gandhi Jina talk, we can say. On 8 August 1942, Quit India movement was started by Congress against the Britishers. And what were their aim? Immediate withdrawal of the British. Gandhi, Nehru, other senior Congress leaders were arrested. Congress party was banned.
Gandhi released on medical grounds by the new Viceroy Lord Wavell in May 1944. When he released, held talks between Quaid-e-Azam and Gandhi. In September 1944 at Quaid residence 21 letters were also exchanged. यानी इन टॉक्स के अलावा भी गांधी में और Quaid-e-Azam में 21 लेटर्स का तबादला हुआ. No agreement were made. Gandhi participated in these talks on personal capacity, not as a यानी ये अपने बिहाफ पे शामिल हुए थे, ना कि कांग्रेस मेंबर बन के शामिल हुए थे. बट नो नॉट फ्री ऑफ डाउट्स, लेकिन ये कायद-ए-आज़म के लिए शकूक व शुबहात का बायस बन रहे थे. What were the talks? In these talks, Gandhi, these are the point of views of Gandhi and point of views Quaid-e-Azam. Once again, he refused the separate Muslim nationality. He took a stand that in a time in history, if a great number of Indians changed their religions, they became Muslim, but their nationality did not change. यानी इनकी कौमियत नहीं बदलती. He insisted on the withdrawal of third power from British, and mutual differences will be solved later on. उनके ख्याल में ये था कि थर्ड पावर पहले निकल जाए और हम अपने बाहमी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाद में सॉल्व करेंगे. इसके अगेंस्ट में Quaid defended the Muslim nationality in this way. In response, Quaid-e-Azam strongly defended the separate Muslim nationality and he said that Indian Muslims are separate nations having their own culture, tradition, language, customs. Quaid-e-Azam argued that internal problems of the Muslims and Hindus should be solved first, then British will leave India easily. Otherwise, Muslim will come under Hindus domination. यानी पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, फिर हमें ब्रिटिशर्स का जाना चाहिए. अदरवाइज दे विल बिकम अंडर द फुल डोमिनेशन, कंप्लीट डोमिनेशन, यानी बर्तरी हिंदुओं को मिल जाएगी. These talks were also unsuccessful due to the different viewpoint of both leaders. First time Gandhi was brought to negotiate, यानी मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन इन टॉक्स के बदौलत ये हुआ कि ये दोनों ने पार्टीशन के लिए बात की गांधी ने. ड्यू टू दीज टॉक्स Quaid-e-Azam रिमूव मैनी डाउट्स रिगार्डिंग पाकिस्तान. लेकिन इस टॉक्स के ज़रिए Quaid-e-Azam के ऊपर जो शक था, जो डाउट्स थे, वो उनको क्लियर हो गए अब अबाउट कांग्रेस और हिंदूज़ के विद द एटीट्यूड Muslims' attitude. Clear? Thank you.